हाँ सर, फैन खोलिए, खोलिए फैन डालिए, गर्मी हो रही है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। In previous classes, we were studied about the LAQs. We completed LAQs 19, 20, and 21 LAQs. In 19th question, that is from the electrochemistry and kinetics, I was explained you 3 questions, and in the question number 20, I was explained you preparation of ozone, preparation of ammonia, and preparation of chlorine and their properties. In the question number 20, I was explaining you about the name reactions. From today onwards, I am going to explain you about the SAQs. That is from the question number 11. In the question number 11, that is from the solid state. ये 11th क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट से आता हूँ. In this question number 11, there are 2 important questions are there from the solid state. First one derives Bragg's equation. Bragg's equation. Bragg's equation. And the second expected question in this, ये दो में से एक एग्जाम में आने वाला है इंशाल्लाह. दो ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछ रहा क्वेश्चन से. एक पहला क्वेश्चन जो है ब्रैग्स इक्वेशन है, एंड द सेकेंड वन इन दिस चैप्टर 11th क्वेश्चंस में से जो सेकेंड क्वेश्चन ज्यादा आ रहा, एक्सप्लेन अबाउट दी सेमी कंडक्टर्स. राइट अबाउट दी सेमी कंडक्टर्स. ओके, इंशाल्लाह ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन आता 11th में 100%. इन दोनों में से ही रहता. तो आई विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट वन, ब्रैग्स इक्वेशन. Okay, and this is the important expected question. Derives Bragg's equation बोल के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. So explanation दे रहा हूँ मैं. Bragg's equation के वास्ते थोड़ा ये डायग्राम देख लेना है आपको. एक, दो या तीन लेयर्स डाल लो. S. When X-ray beam is incident, when X-ray beam is fall on the surface of the metallic crystal in which atoms or ions are arranged in a regular manner, just was drawn that. Once again I am repeating, when X-ray beam is fall on the surface of the metallic crystal, so this is the X-ray, that X-ray is diffracted from the lattice points. So this is the wave 1 that is diffracted from which layer? First layer. Now wave 2 I am taking, this is the wave 2. Wave 2 is diffracted from which layer? Second layer. When X-rays are fall on the surface of the metallic crystal in which atoms or ions are arranged in a regular geometry, that X-rays are diffracted from the lattice points. Consider wave 1 is diffracted from first layer and wave 2 is diffracted from the second layer. This is the second layer. Distance between these two layers you have to write, this is the distance between these two layers. So this is the introduction. When the X-rays are incident on the surface of the metallic crystal, they are diffracted from the lattice points. Wave 1 is diffracted from the first layer and wave 2 is diffracted from the second layer. So this is about the diagram. Now next, if these two diffracted waves are in one phase, if these two diffracted waves forms constructive interference, then these two are said to be parallel waves.
इन दोनों को पैरेलल वेव्स कैसा कंसिडर करना है. Now then, extra distance traveled by the second wave. See here, I am writing this two triangles set here. See here. So this is the angle theta and this is the angle another theta. So I am labeling this A and B and this is C and this is D. When X-rays are incident on the surface of the metallic crystal, they are diffracted from the lattice points. Wave 1 is diffracted from the first layer and wave 2 is diffracted from the second layer. If two diffracted wave forms constructive interference, that may form constructive or destructive interference. If these two are in same phase, if these two forms the constructive interference, then these two are said to be parallel waves. The extra distance traveled by the second wave, this is the extra distance traveled by the second wave. यहाँ तक सेम ट्रैवलिंग कर रही है. देखिए यहाँ से दो पैरेलल है. एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल करा सेकेंड वेव कितना ज्यादा ट्रैवल करा, दैट इज द CB प्लस BD. दिस इज इक्वल टू दी n लैम्बडा के बराबर रहता है. ये बोल रहा है, ब्रैग्स इक्वेशन है ये. सो थोड़ा अपन डेरिवेशन करना है. फिर एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. When X-rays are allowed to or incident on the surface of the metallic crystal in which atoms are arranged in a regular geometry, those X-rays are diffracted from the lattice points. Wave 1 is diffracted from first layer, wave 2 is diffracted from second layer. If these two diffracted waves forms constructive interference, ये दो जाके constructive interference form कर रहे हैं, then the extra distance traveled by the second wave, that is how much CB plus BD is equal to the n lambda. This is called as the Bragg's equation. Now this from these triangles I am writing first triangle. दो triangles बना रहा हूँ. First वाला triangle ABC. ट्रायंगल ABC के अंदर sin थीटा क्या होता है. आई एम राइटिंग द sin थीटा ऑफ दिस ट्रायंगल. दैट इज, इसका sin थीटा क्या होगा भाई, CB प्लस AB. नाउ देन उसके बाद में sin थीटा इज इक्वल टू CB एज इट इज लिख लीजिए. AB की जगह आप डिस्टेंस लिख लीजिए, D लिख लीजिए. नाउ देन CB क्या होने वाला है यहाँ, CB इज इक्वल टू D sin थीटा होता है. सो दिस इज द CB फ्रॉम दिस ट्रायंगल. नाउ देन from the another triangle, that is triangle ABD. ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD के अंदर sin थीटा क्या होने वाला है, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, BD बाई AB. नाउ देन sin थीटा इज इक्वल टू BD बाई AB की जगह आप क्या लिखेंगे, D लिखेंगे. नाउ देन BD इज इक्वल टू D sin थीटा. Now then what is our equation, that is this equation, CB plus BD is equal to n lambda. Now then what is the CB value is D sin theta and BD value is also D sin theta, that is equal to n lambda. That means n lambda is equal to 2D sin theta. This is called as the Bragg's equation. This is about the first question, important expected question. 11th क्वेश्चन में मैक्सिमम ये पूछता हूँ. फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, ये थोड़ा डायग्रामेटिकली फिर एक बार डायग्राम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ. देखिए ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है. एटम्स रेगुलरली अरेंज होकर रहते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड्स में. When X-rays are incident on the surface of the metallic crystal, they are diffracted from the lattice points. This is the wave 1 diffracted from the first layer. This is the wave 2 that is diffracted from the second layer. Okay, this is the wave 1. This is the wave 2. If these two waves forms the constructive interference,
then the extra distance traveled by the second wave from the first wave. ए बी, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो, लाइन डाल लो, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनते, ए टीटा ये टीटा है. नाउ देन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिए उसको नोट कर लो, दैट इज सी बी प्लस बी डी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू दी एन लैम्बडा. सो दो ट्रायंगल से भाई फर्स्ट ट्रायंगल ले लेना. व्हाट इज द फर्स्ट ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी, ए बी सी का साइन टीटा क्या होने वाला है? सी बी बाई ए बी. तो सी बी बाई ए बी से आपको डी साइन टीटा आता. ट्रायंगल ए बी डी, इससे भी आपको बी डी वैल्यू आती, दैट इज इक्वल टू डी साइन टीटा. देन ये दो वैल्यूज को अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिए, एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin theta. दिस इज कॉल्ड एज द ब्रैग्स इक्वेशन. So this is the first question, expected question in the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चन ब्रैग्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करते जा रहा. यही क्वेश्चन आ सकता है आपको. अगर वो छूट गया तो आपको नेक्स्ट और एक क्वेश्चन भी है ये चैप्टर में, दैट इज राइट अबाउट दी सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स मतलब which allows the electricity to pass through them are called as conductors. अपने से electricity pass कर रहे हैं तो वैसे substance को conductors बोलते. अपने से electricity pass नहीं कर रहे हैं, which does not allows to those substance which does not allows the electricity to pass through them are called as insulators. Now then substances which are having less conductivity, अपने से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो सब्सटेंसेस को क्या बोल के बुलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स बोल के बुलाते हैं. जनरली सी हियर, ये वैलेंसी बैंड है और ये कंडक्टिव बैंड है. वैलेंसी और कंडक्टिव बैंड के अंदर गैप अगर कम है तो वो कंडक्टर्स कैसा काम करते, और वैलेंसी बैंड और कंडक्टिव बैंड के बीच में गैप ज्यादा है तो इंसुलेटर्स के ऐसा काम करते. ओके, इफ द गैप बिटवीन दी वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टर बैंड, इन दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में दरमियानी है, ज्यादा नहीं है. इफ द गैप बिटवीन दी वैलेंसी एंड कंडक्टिव बैंड इज लेस, दोज आर एक्ट्स एज द कंडक्टर्स. इफ द गैप इज मोर, दोज आर एक्ट्स एज द इंसुलेटर. इफ द गैप बिटवीन दीज टू बैंड्स, कंडक्टिव एंड वैलेंसी बैंड, is in between these two, those are acts as the semiconductors. Those are the poor conductivity of electricity. ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ऐसे सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. ये पूरे आपको समझाया हमें. आपको डेफिनेशन क्या लिखना है सेमीकंडक्टर्स में? सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस which have poor which are having poor electrical conductivity. Those are called as the semiconductors. This is the definition of semiconductors. Now then after that, semiconductors are of two types. Semiconductors are of two types. First type is intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors. And second type is extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors. Semiconductors are of two types. First one intrinsic semiconductors, second type extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are those substances whose conductivity is improved by means of heating. If you are raising the temperature, conductivity of those substances increase. Such type of the substance whose conductivity is increased by means of heating process, those type of the substance, those type of the semiconductors are called as intrinsic semiconductors. Once again I am repeating this definition. Intrinsic semiconductors, substances whose conductivity is improved by increasing the temperature, those type of the substance are called as intrinsic semiconductors. Second type extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors are those substances whose conductivity is improved by adding the impurities to that. वो सब्सटेंस को impurities ऐड करके उनकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो वैसे सब्सटेंसेस को
एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स बोल के बुलाते हैं। एडिंग द इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड एज, क्या बोल के बुलाते हैं, इम्प्यूरिटीज को ऐड करना, मतलब दूसरे एलिमेंट्स को थोड़े मिला देना। प्योर सब्सटेंस को अपन दूसरे एलिमेंट्स मिलाने को क्या बोलते हैं बोले तो डोपिंग। वी आर एडिंग सम क्वांटिटीज, सम अमाउंट ऑफ द अनदर सब्सटेंस to the semiconductors, that is the process is called as the doping process. Adding the impurities to the semiconductors is called as doping process. We are adding generally two types of the substances, two types of the material. First type is fifth A group elements, we are adding fifth A group element, and second type we are adding the third A group elements to improve the conductivity. If we are adding the fifth A group element to the semiconductors, such type of the doping, such type is called as, क्या बोल के बुलाते हैं उसको, n type बोल के बुलाते हैं। Next, if we are adding third A group elements to the semiconductors to improve their conductivity, that is called as p type of doping. अच्छा भाई, एक एग्जाम्पल ले लो, फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट, आई एम राइटिंग द सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन को मैं क्या मिला रहा हूं, मैं फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स फास्फोरस या आर्सेनिक मिला रहा हूं। इन लोगों को मिलाने की वजह से यू नो दैट सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है भाई, 4 है। सिलिकॉन के साथ में फास्फोरस मिला दिए, ये फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 5 है। नो नेक्स्ट 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं इसके साथ में, और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जिसकी मोबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी मत यानी कि कंडक्टर अच्छा कंडक्टर कैसा बन जाता। नो नीड टू राइट ऑल दैट मैकेनिज्म, जस्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस। एडिंग द impurities to improve the conductivity is called as the doping process. Doping is of two types, n type and p type. If you are adding the fifth A group elements to the semiconductor, that is called as n type of doping. If we are adding the third A group elements like the boron aluminum, this type of the doping is called as a p type of doping. So this is about the another important question. First question, इंशाल्लाह ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मिलेगा। तो यही चैप्टर से अभी 2-3 VSAQs है, इंपॉर्टेंट VSAQs है इन दिस चैप्टर। अगर ये नहीं आया तो 2 VSAQs पूछ सकता है ये चैप्टर से। इन द वेटेज फॉर द फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट इज 4 मार्क्स। जनरली 4 मार्क्स में ये SAQ में 11th क्वेश्चन में पूछता, अगर नहीं पूछा तो 2 VSAQs पूछ लेता। उसमें फर्स्ट वाला शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट। व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट, इसके बारे में समझा रहा है मैं। शॉर्ट की डिफेक्ट इज द पॉइंट डिफेक्ट, ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड इन आयनिक क्रिस्टल, ओके, प्लस माइनस ऐसा डाल लीजिए आप, आयनिक क्रिस्टल, जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड इन द आयनिक क्रिस्टल, प्लस माइनस लाइक दैट, प्लस माइनस। See that in the Schottky defect, one cation and one anion, एक कैटायन को निकाल लो भाई, इसके अंदर है, एक कैटायन को निकाल देना और एक एक एनायन को निकाल देना, माइनस चार्ज वाला। ये दो पेयर मिलके अपनी जगह छोड़ दे के निकल जाने को क्या बोलते बोले तो एक डिफेक्ट है, खामी है ये। सो व्हाट इज दिस Schottky defect means missing of pair, that means cation and anion from its lattice point, अपनी जगह से cation and anion दो भी निकल जाना, a pair is missing from their sides, that is called as the Schottky defect. It is observed in an ionic crystal in which coordination number is more. For example, you have to write NaCl, CsCl, these are the examples for the Schottky defect. And the second type of defect observed in a crystal, that is Frenkel defect. Okay, in this Frenkel defect, I am taking a metallic crystal. See that I am arranging atoms in this manner, A, B, like that. So, this is the regular arrangement of the atom in a metallic crystal. Like this they are arranged. See that
What is the Frenkel defect means? One atom is missing from its place, अपनी जगह छोड़ देता, जाके क्या करता, कहीं भी दूसरी जगह जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में, इनर कैविटीज में डिस्प्लेस हो रहा, अपनी जगह तब्दील कर रहा हो. Missing of the element from its place and occupies in the inner cavities or interstitial space of the metallic crystal is called as the Frenkel defect. It is observed in a compounds or in a crystal in which coordination number is less. Example is AgCl, ZnS. All these are the examples in which Frenkel defect is observed. So this is about the second VSAQ. And now then after that, what is F center? F center के बारे में पूछता हूँ. ओके, एफ सेंटर देखिए प्लस माइनस, एक एनायनिक साइट को मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बिठा दे रहा हूँ यहाँ पे. एनायनिक साइट इज ऑक्यूपाइड विद द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से दिस क्रिस्टल इम्पार्ट्स द कलर्स, इसको कलर्स आते. सो सच टाइप ऑफ द सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एफ सेंटर. इसको क्या बोल के बुलाते बोले तो एफ सेंटर बोल के बुलाते. दिस इज अबाउट द एफ सेंटर. So these are the some important VSAQs in the solid state. Now next in the question number 12. Question number 12. कहाँ से आता है question number 12? That is from the solutions. The weightage for this chapter, solutions का जो weightage है वो 6 marks है. एक VSAQ और एक SAQ आता. Generally ये chapter से problems पूछते. तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं थोड़ा आज रिवाइज कर लेंगे बात. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दिस एसएक्यूज. क्वेश्चन नंबर 11 I was completed. In the question number 11 I was explained you two questions, which are those. First one is the Bragg's equation and second one is the semiconductors. Now in the question number 12 there are 4 questions are important I am writing. First one is molarity. Define molarity. Define molarity and the problems are related to the molarity. I will explain one by one. And the second one is what is molality or define molality. Define molality and the problems which are related to the molality. And the third one in this chapter, third expected question is from the mole fraction. Define mole fraction. Define mole fraction and calculate the mole fraction, that is the H2SO4 or sucrose, whatever it may be. The problems which are related to the mole fraction, these are important. Now next in the question number 12, last expected question is question from the Rolle's law. Define Rolle's law and problem related to the Rolle's law और positive negative deviations के बारे में पूछता. What is positive deviation, what is negative deviation, इसके बारे में लिखो बोल के पूछ रहा. So these are the important questions in question number 20. इंशाल्लाह ये चारों में से ही ये क्वेश्चन आता आपको. मोलारिटी का डेफिनेशन या प्रॉब्लम, मोलालिटी का डेफिनेशन या प्रॉब्लम, थर्ड वन मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन या प्रॉब्लम, नेक्स्ट रॉल्स लॉ का डेफिनेशन, इसके साथ में प्रॉब्लम पूछ लेता. ज्यादा रॉल्स लॉ के प्रॉब्लम्स देते रहता एग्जाम में. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12. विल सी वन बाय वन. आज ये क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको. डिफाइन मोलारिटी. व्हाट इज द मोलारिटी? मोलारिटी का आंसर देना है आपको. व्हाट इज मोलारिटी? Molarity means number of moles. All these are the methods to express the concentration of the solution. Concentration of the solution means what? We are taking a solution. That means water ले लिया हमने. This is the water. In this water I am adding small quantities of the salt. इसके अंदर थोड़ा नमक या शुगर ऐड कर लिया हमने. तो this is called as water. जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है इसको सॉल्वेंट बोलते. जो कम क्वांटिटी में रहता है उसको क्या बोलते? सोल्यूट बोल के बुलाते. The component which is present in greater extent, more extent is called as solvent. The component which is present in lesser extent is called as solute. इन दोनों के मिक्सचर को solution बोल के बुलाते. Now then concentration of the solution का मतलब क्या है? ये solution में कितना solute पड़ा हुआ है. We are expressing the amount of the or quantity of the solute present in that solution. That is called as the
concentration of the solution. To express the concentration of the solution, these are the things used. You know that is the molarity is the first thing. Second one is the normality, mole fraction, mass percentage. All these are the method to express the concentration of the solution. Among them, molarity is the most common one. What is the molarity? We are taking the number of moles of solute in 1 liter. 1 लीटर के अंदर, एक कंटेनर में 1 लीटर है भाई, 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? How many moles of the solute present in the 1 liter of the solution is called as the molarity. The number of moles of solute present in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution is called, this is the definition, is called as what? Molarity. This is the definition for molarity. It is represented with the letter M. इसको M से represent करते, कैपिटल M लिखना है. M is equal to, in short ये definition अपन ऐसा लिख ले सकते हैं, number of moles and the लिया, फिर उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं आप, number of moles present in V in volume in liters. This is the formula. So ये simple formula है molarity का, M is equal to N by V in liters. Next आपको मालूम है number of moles को अपन weight by ग्राम molecular weight ऐसा कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, M is equal to N की जगह आप weight by ग्राम molecular weight into 1 by V in liters, ऐसा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. अगर मिलीलीटर्स में पूछा तो ये फॉर्मूला कैसा लिखना है, what is the formula to calculate the molarity in the milliliters? Capital M is equal to weight by gram molecular weight into, या मिलीलीटर्स लेने से यहाँ पे 1000, यहाँ पे ले लेके V in milliliters, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको. So this is about the formula to calculate the molarity in milliliters. Then we will see that problems, बेटा इसके relate के problems थोड़े समझा रहा हूँ मैं, जो exam point of view में important है. Which are those questions? First question is calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of solution. I'm writing that question. Calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of solution in which 5 grams of NaOH 5 grams of NaOH is present in 450 ml of the solution. 450 ml of the solution. This is the question. Calculate the molarity of solution in which 5 grams of NaOH is present in 450 ml of the solution. Now see that in this question volume is given in milliliters. So for that what is asking in this problem, molarity is asking. Therefore I am writing the formula, molarity formula in the milliliters. That is, molarity is equal to weight of the substance, gram molecular weight of the substance into 1000 by volume in milliliters. Okay, so this is the formula. For writing this formula you will get 1 mark. After this, by seeing this formula you write this data clearly. यहाँ पे जो ज़रूरत है वो लिख लेना. weight क्या दिया भाई, कितना वेट दिया, कौन सा सब्सटेंस दिया, यहाँ देख लीजिए, आप उसको क्लियर से लिख लीजिए. 5 grams इज गिवन, 5 grams है, ये वेट दे दिया.
Now next second thing, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई? ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कौन सा केमिकल है उसको पकड़ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये टोटल हो गया 40। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। Now then what is the volume is given in milliliters? Volume in milliliters is how much? That is 450. So these are the values given. Now then you substitute these values in this formula, you will get the molarity of that solution. Molarity M is equal to, what is the weight given? That is the 5 grams. Gram molecular weight of the sodium hydroxide is how much? That is the 40. Now then after this, see that 1000 by 450। चलिए इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए आप, थोड़ा ये मैथमेटिक्स करिए, ये कट करिए इससे इसको और इससे इसको कट करिए और 2 के टेबल से कट कर दीजिए आप। 2 2 4 आता और 2 5 10 जाता और फिर उसके बाद में 5 1 चले गया और 5 9 45 हो गया। तो क्या बच गया है यहाँ पे? 5 by 9 to C 18। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, यू विल गेट द आंसर। 5 by 18 आता, दैट इज योर आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए उसको, वट एवर इट मे बी, दैट इज योर आंसर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इन विच 5 grams of NaOH is present in 450 ml of the solution। तो यहाँ पे क्लियर से मोलारिटी कैलकुलेट करो बोल रहा, यहाँ पे वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स दिया, देन उसीलिए मैं मोलारिटी का फॉर्मूला मिलीलीटर्स में डाल लिया। वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। नाउ देन फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लियर से इसका डाटा लिख लिया, यहाँ पे जो भी दिए वेट कितना है 5 ग्राम्स है। Now then gram molecular weight of sodium hydroxide इस तरीके से कैलकुलेट करें, you will get the 40 volume in milliliters, that is given 450। Now then you substitute that, you will get this answer. This is about the molarity of this solution। So this is the one problem that is given, that is important। Now then see that another problem is also there that was asked in annual examination। एक महीना पहले जो annual exam हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा, कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। ग्लूकोज सोल्यूशन की मोलारिटी मालूम करो बोल रहा। सो दिस इज योर क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। अब यहाँ से क्लियर से आप ले लेना भाई ये परसेंटेज। असल देखिए पहले ये फॉर्मूला इसमें मिलीलीटर में लिखना है, मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर दे दिया तो आपको फॉर्मूला मिलीलीटर्स में दो, परसेंटेज में जो दे दिया आप फॉर्मूला मिलीलीटर में ले लेना, 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। चलिए फिर से मैं यहाँ पे क्लियर से डाटा लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे व्हाट इज द वेट इज गिवन, दैट इज यहाँ पे जो 10 जो दिख रहा ना वो 10 ग्राम्स है। वो 10 ग्राम्स, 10% का मतलब 10 ग्राम्स इज प्रेजेंट इन दी 90। सॉल्वेंट का जो वेट है 90 लेना और सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो 90 है, सोल्यूट का वो जो वेट है वो 10 है। 10% का मतलब 10 ग्राम is present in the 90 grams or 90 ml whatever it may be। so 90 में ये दो को मिला के आप नीचे का और ऊपर का दो को मिला के 100 कर लेना, ये परसेंटेज हो जाता आपका। तो वेट इज 90 ग्राम्स 10 ग्राम्स एंड वेट ऑफ सोल्यूट है ये, वेट ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम्स। देन आफ्टर दैट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ले लो भाई। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कौन सा कंपाउंड है वो देख लेना। व्हाट इज द कंपाउंड? ग्लूकोज है, C6H12O6। C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट 6 × 12 करिए, 12 × 1 करिए
और 6 इंटू ऑक्सीजन का वेट 16 है, टोटल आपको 180 आता है. सो दिस इज द ग्राम मालिकुलर वेट ऑफ द ग्लूकोज. देन वॉल्यूम इन वॉल्यूम यहाँ पे डेंसिटी से आप निकाल लिए तो इसका वेट आ जाता, दैट इज द 1 ml की जो वेट है वो 1 ग्राम आता. तो उसी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह आप वेट भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको 90 आएगा. नाउ देन you have to substitute these values in this. Molarity is equal to, what is the weight given, 10 gram. Molecular weight is how much, 180 into 1000 by 8 here. What is the weight or volume, this is the 90. चलिए फिर से वही कैलकुलेशन है भाई, ये कट कर लीजिए आप, फिर वही आने वाला है. यहाँ पे देखिए आप जरा कैलकुलेट करके देखिए, मैथमेटिक्स करिए. 2 9s 18 आता, 2 5s 10 आता, 2 5s 10, 10 5s 15 है, 10 इंटू 5 दैट इज 50, ये 50 डाल लिया. सो 9 इंटू 9 क्या आता, 81 आता. तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द आंसर. दैट इज योर आंसर, दैट इज द मोलारिटी. सो थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज अबाउट द मोलारिटी ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन. Now next about the what is the molality, another one, molality. Molality means, once again I am repeating this definition, everything is same like the molarity only. Molality means the number of moles of solute solute present in, the number of moles of solute present in, instead of taking the volume in the molality, you are taking the weight of solvent here. This is the ideal method to represent the concentration, because we are taking the weight of solute and weight of solvent, it is independent on the temperature. Number of moles of solute present in 1 kilogram, 1 kg of solvent. See here, we are taking the weight of solute and weight of solvent. यहाँ से weight, दोनों के भी weights consider कर ले रहे हैं अपन, तो ये independent of temperature है. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. यहाँ पे weight of solvent को ले रहे हैं, तो इसलिए weight of solvent अगर लिए, if you are taking the weight of solvent, that is known as molality. If you are taking the volume of the solution, that is known as molarity. वो molarity है, volume ले लिए तो, यहाँ पे weight अगर ले लिए तो वो molality होता. The number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent is called molality of the solution, So this is the definition for the molality. Now next one, formula, the letter small m is used to represent the molality. To calculate the molality, we are using this formula once again, number of moles, वो weight in kilograms वैसा लेना है. अब टोटल एक फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ मैं, weight by, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ग्राम मालिकुलर वेट, वेट बाई ग्राम मालिकुलर वेट लिखना है, प्लस इनटू यहाँ पे क्या लिखना है भाई, 1000 बाई A in kilograms. What is A here? क्लियर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये भी वेट है, ये भी वेट है. ये वेट ऑफ किसका है भाई, ये दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये. सो दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट. जब से जो प्रॉब्लम बोला उसकी अगर आपको मोलालिटी कैलकुलेट करो बोला तो सेम प्रोसीजर यूज करते आप. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन. 10% ग्लूकोज सोल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट करो बोले, जब से सेम अपन जो करे वही प्रॉब्लम, स्मॉल m आ जाता. स्मॉल m इज इक्वल टू वेट बाई ग्राम मालिकुलर वेट. once again I am writing this question, 10% W by W, calculate the molality.
मोलालिटी ऑफ 10% W/W सॉल्यूशन। सो वेट बाय ग्राम मालिकुलर वेट ले लेते आप इनटू 1000 बाई यहाँ पे A इन सॉल्वेंट वेट इन यहाँ पे ग्राम से ले लेना। वही फॉर्मूले में मोलालिटी, क्योंकि वाटर की वेट और वॉल्यूम सेम रहने की वजह से आप वहाँ पे 90 सब्स्टिट्यूट करा मैं, तो यहाँ पे भी सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज कर लेना है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है ये क्वेश्चन से 10 ग्राम्स है। ग्राम मालिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 180 है इनटू 1000 बाई A इन ग्राम्स। A इन ग्राम्स इज हाउ मच 90। सेम सिंप्लीफिकेशन है भाई, कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। So this is about the molality. This is the another important question. Now next about the mole fraction. What is mole fraction? Mole fraction फ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई? मोल रेशियो, मोल्स का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन मीन्स ratio of the moles of what? Just you see here, mole fraction is written with x. So for the explanation I am writing this. See here, this is the one solution I am taking. In this two components are present, that is salt water is I am taking. So how many components are there? First one is called as salt and second one is known as the water. There are two components are present. To calculate the mole fraction of salt, अगर salt का mole fraction बोल रहा तो क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट यहाँ लिख लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट ले लेके फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दोनों को यहाँ बॉटम में डाल लेना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, देखिए बेटा, दिस इज द रेशियो। इसका रेशियो है, मोल्स का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन इज द मोल रेशियो। मोल रेशियो बिटवीन व्हाट? मोल रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को लेके इसको मैं इससे डिवाइड कर ले रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर रहा हूँ। Then the ratio you will get, that is called as the mole fraction. It is the ratio between the number of moles of one component to the number of moles of all components present in the solution. Number of moles of one component को ऊपर डाल लेना, total number of moles को नीचे डाल लेना, यानी कि salt and water को, you will get the value that is called as the mole fraction. So वैसी mole fraction of water को मालूम करो बोला तो क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ले लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, देन इसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इस तरीके से लिख लेना। ओके, एक कंपोनेंट के मोल्स को रिमेनिंग कंपोनेंट्स के मोल से, यानी कि टोटल कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर लिए, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। स्मॉल प्रॉब्लम इज देयर। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम, एक सिंपल प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 98% H2SO4 solution. H2SO4 solution. I'm writing this question clearly. Calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of 98% which solution? First I am taking this solution. Which solution? H2SO4 solution. Okay, this is the question given. Calculate the mole fraction of 98% H2SO4 solution. तो क्वेश्चन पढ़ना है अच्छा, एक बार क्या मालूम करो बोल रहा मोल फ्रैक्शन। इसको किससे लिखते? x से लिखते। इसका मोल फ्रैक्शन मालूम करना है H2SO4 का, x H2SO4। तो है क्या ये मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या लेना आपको? जिसका मोल फ्रैक्शन मालूम करो बोल रहा, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर डाल लेना, NH2SO4 बाई, फिर क्या करेंगे आप? n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को डिनोमिनेटर में डाल लेंगे आप।
तो इस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन के वास्ते मोल्स को कैलकुलेट करने का काम रह जाता। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट, देन यू सब्स्टिट्यूट दैट नंबर ऑफ मोल्स in this formula, you will get the mole fraction. So to calculate the number of moles of H2SO4, we are dividing the given weight, that is 98, with the gram molecular weight of the H2SO4. NH2SO4 is equal to 98 by 98. You will get the 180 here. Number of moles of H2SO4 is 1. Now then number of moles of water H2O, number of moles of water, तो 98 ऊपर आ गया, तो रिमेनिंग 100 को बराबर करने के वास्ते आपको 2 मिला लेना है। वो नीचे वाला कभी भी वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है यहाँ पे, और तो वाटर का जो वेट है 2 ग्राम से लेना है आपको। तो ये 2 बाई यहाँ पे क्या हो गया भाई, 2 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ले लेना, 2 बाई 18, 2 by 18 क्या आता भाई, वैल्यू 1 by 9. Now then you substitute this number of moles in this formula, that is XH2SO4 is equal to NH2SO4 की जगह आप क्या कर रहे हैं 1 by, फिर once again NH2SO4 की वैल्यू 1, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 by 9 है। तो इसको एलसीएम निकाल के करे तो अपने को क्या आता भाई, यहाँ पे द वैल्यू इज 9 by 10 आता। इसको 9 को मैं 10 से डिवाइड कर लिया तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज द 0.9 आता। सो दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2SO4। अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, यू डू एट होम। घर में आप ये कैलकुलेट करिए, आप calculate the mole fraction of H2SO4 and water, not the H2SO4. Calculate the, once again I am repeating the question, a sucrose in water is labeled as, I am taking this question, sucrose in water is labeled as 20% W by W. Sucrose in water is labeled as 20% W by W, that is weight by weight, ये mass percentage है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, आप 20 grams of sucrose लेना है, remaining 80 grams of water लेना है आपको। ये जो ऊपर का weight होता sucrose का 20 और water का जो weight होता ये 80 grams। तो calculate the, once again I am repeating this question, sucrose in water is labeled as 20% W by W. Calculate the mole fraction of sucrose and water. इनका mole fraction calculate करना है। I will continue tomorrow inshallah.